Welcome all for a lecture series of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. In last class, we are discussing in respect of the provision of arrest under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and we make a detailed discussion. हम लोगों ने बहुत ब्रॉड रूप से अरेस्ट के प्रोविजंस को समझा कि व्हाट इज अरेस्ट, then we also understand what is the purpose of arrest, then we understand there is a difference between arrest, custody and detention, then we also understand arrest with warrant and arrest without warrant. Why there is two kind of arrest? It is because of the reason कि decision is being taken by either court or police officer in respect of arrest regarding presence of circumstances of arrest. Then we also understand what kind of procedure is being followed during the arrest and after arrest. Once we understand the arrest, the next discussion, and which is very important discussion in respect of the topic of arrest, that is right of arrested person. Now, regarding this right of arrested person, firstly we need to know or we need to examine, हम लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि why there is a provision of right of arrested person. Because normally what we understand, a person who is being arrested is a accused person. So why we bothered about the right of the accused person? Normally it gives such kind of understanding. Now the right of arrest, discussion in respect of right of arrest is necessary, keeping in view once we read the provision of arrest, what we will analyze? We will analyze if police has a wide power in respect of arrest, and such a wide power give a chance to use or exercise this power in an arbitrary manner. So in order to check illegal arrest or in order to check unauthorized arrest, there is a need of certain procedural safeguards in favor of accused person, so that these illegal exercise of the power of arrest can be properly checked. Again, we all know Article 21 of the Indian Constitution provides no person shall be deprived right to life or personal liberty except procedure established by law. Here the procedure which depriving the personal liberty must be just, fair and reasonable. So in order to ensure the procedure is just, fair and reasonable, there is a requirement to recognizing certain safeguards in form of the right of arrested person. So that here Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita also recognizing certain procedural safeguard, so that the person who is being arrested right cannot be violated. It is because of this reason the right of arrested person became very important, and for this reason we are here discussing right of arrested person. So firstly, regarding the right of arrested person or person who is arrested or detained, we will just discuss Article 21 of the Article 22 of the Indian Constitution, which talks about certain fundamental right is being given to the arrested person or a person who is being detained. Article 22 जब हम लोग देखते हैं तो you will find कि arrested person का भी कुछ fundamental rights होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इन फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 22 के माध्यम से उन सारे पर्सन्स को दिया गया है जिसको डिटेन किया जाता है कस्टडी में या फिर जिसको अरेस्ट किया जाता है, और ये राइट्स जो हैं वो अरेस्टेड पर्सन को आर्टिकल 22 में मिले हुए हैं. तो जब हम लोग फर्स्ट राइट्स को देखते हैं कि कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया या डिटेन इन द कस्टडी किया गया, तो उसका राइट क्या है? ही हैज़ राइट टू नो अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मीन्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट.
कि कभी भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा या कस्टडी में डिटेन किया जाएगा तो उसका ये राइट है कि वो जाने कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है और किस ग्राउंड पे उसको डिटेन किया गया है. नाउ द सेकेंड राइट, फंडामेंटल राइट इज रिकॉग्नाइज्ड to the arrested person is right to consult and defend by a legal practitioner of his own choice. तो right to consult and defend दोनों मिला हुआ है. right to consult and defend दोनों arrested person को मिला हुआ है. As soon as person is arrested, he need to be informed by the authority. In a case of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बट वी विल डिस्कस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो हम लोग डिस्कस किया कि पुलिस की ये ड्यूटी यहाँ पर बन रही है. ही हैज़ टू इन्फॉर्म दैट पर्सन कि यू हैव राइट टू कंसल्ट द लीगल प्रैक्टिशनर और यू हैव अ राइट टू डिफेंड by the legal practitioner of his own choice. Now the third fundamental right is right to produce before a magistrate, nearest magistrate within 24 hours of his detention. कि जिसको भी अरेस्ट किया गया है वो पुलिस अथॉरिटी उसको 24 आवर के अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष में प्रस्तुत करेगी. नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन बियॉन्ड द 24 आवर, अगर आपको 24 आवर के बाद भी उसको डिटेन करके रखना है अरेस्टेड पर्सन को, तो उसके रिस्पेक्ट में भी प्रोटेक्शन है. और प्रोटेक्शन क्या है कि उसको डिटेन करके तभी आप रख सकते हैं वंस यू गॉट द ऑथराइजेशन ऑफ लीगल अथॉरिटी. तो विदाउट अथॉरिटी you cannot detain more than 24 hours. So this way what we will understand, we will simply understand by reading article 22 of Indian Constitution कि there are certain fundamental rights guaranteed to the person arrested or detained in a custody, and these fundamental rights include right to inform in respect of ground of arrest, right to consult and defend by the legal practitioner of his own choice, right to produce before a magistrate within 24 hours, or if the person is being detained more than 24 hours, he cannot be detained without the proper authorization of the authority. So this way these fundamental rights are guaranteed under the Indian Constitution of those persons who are being arrested and detained. Now secondly, there are many provisions under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita which talks about right of arrested person. Once we see section 47 is the first provision, and this is an incorporation of the fundamental rights. ये जो 47 जो है वो incorporation है एक तरह से fundamental rights का in statutes of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Once we see right 47, what we will find? We will find that कि every person arrested shall be informed as soon as possible at the ground for such arrest, and if offence is bailable, of the right to be released on bail. तो यहाँ क्लियर है कि once a person is arrested, he must be informed in respect of ground of arrest and he must be informed in respect of right to bail. कभी भी किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उसको इन्फॉर्म करना है कि आपके ग्राउंड क्या है, व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड, क्यों आपको अरेस्ट किया गया है. सेकेंडली, ही इज ऑल्सो बीइंग इन्फॉर्म्ड इफ द ऑफेंस इज बेलेबल वन दैट यू हैव अ राइट टू बेल. तो यू विल गेट ऑल recourse in order to get your bail. That is section 47. Now, right to inform relative or friend. The second important right is being given to the person arrested is in form of section 48. Please see carefully section 48. Right to inform friend or relative. This is very important in order to check the arbitrary arrest or an illegal arrest. Whenever a person is arrested, he must be asked to whom in respect of your arrest we are going to inform it. किसको हम लोग इन्फॉर्म करें? Is your some near relatives are there or your friends are there? So that it is a duty of that police officer to inform the near relative in respect of the arrest of that person and in respect of a place where he is kept in custody. Now,
thirdly, right to meet an advocate during the investigation, section 38. That is very important. Everyone who is being arrested and interrogated, any person who is being arrested or interrogated, he has the right to consult the legal practitioner in course of their interrogation. अपने इंट्रोगेशन के दौरान वो चाहे तो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकता है, ऑल्दो दैट इज़ वेरी मच क्लियर बाय रीडिंग सेक्शन 38, नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन, पूरे थ्रू आउट द इंट्रोगेशन में नहीं उससे कंसल्ट कर सकता है, लेकिन ही हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उसको अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सके इन कोर्स ऑफ द interrogation. So that is a right which is being given to the arrested person, right to meet an advocate during the interrogation, and this is in section 38. Now the next is right to health and safety. So please see section 56 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. The police officer having custody of an arrested person shall take all reasonable care in respect of their health एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन. कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसकी कस्टडी में वो अरेस्टेड पर्सन है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसके हेल्थ का सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, हेल्थ और सेफ्टी के रिस्पेक्ट में टेक केयर करे. तो इट मीन्स कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन हु इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस इन बाय द अरेस्ट, दैट विल बी टेकन केयर बाय द पुलिस. And it is because of this reason, since it is a duty of the police officer to take a reasonable care in respect of health and safety, तो इसी रीजन से right to medical examination is also be there, जो कि हम लोगों ने 51, 52 and 53 में डिस्कस किया कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन कैन बी कंडक्टेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज, रेप एक्यूज का भी हो सकता है. देन 53 इज अ जनरल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन. तो मेडिकल एग्जामिनेशन is very important right which is being guaranteed to the arrested person under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita in order to check the custodial violence. If there is a custodial torture, then this right of medical examination will be great helpful for those arrested person. Then right to produce before a magistrate, this is a constitutional fundamental right which is being incorporated here in a Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Once a person is being arrested, he must be produced before a nearest magistrate within 24 hours. Then right not to be detained beyond 24 hours. उसको डिटेन नहीं करके रखना है 24 आवर अनलेस द डिटेंशन इज़ बीइंग ऑथराइज्ड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी. जब तक डिटेंशन जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज ना हो तो नहीं. तो दिस इज गिवन इन सेक्शन 57, प्लीज रीड इट. Right to be produced before a nearest magistrate, and then right not to be detained more than 24 hour excluding the hour of journey is given in section 58. Now right to free legal aid. Although Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita does not expressly mention that at the point of arrest free legal aid is being available to arrested person, but it is being established through the so many decisions of the Supreme Court. And again we all know Article 39A of Indian Constitution mandate free legal aid to every person. So in accordance with that mandate, the person who is being arrested and producing before a magistrate after 24 hours, it is a duty of magistrate to ensure कि if that person require any free legal assistance in order to defend their right, to ensure that free legal aid to the arrested person. Now protection from unnecessary restraint, that is section 46, means person arrested shall not subject to more restraint. Unnecessary restraint उस पर नहीं अप्लाई करना है, उतना ही अप्लाई करना है जितना वो ज़रूरी है, सो दैट कि अगर वो स्केप कर रहा है तो उसको प्रिवेंट किया जाए. नाउ फाइनली राइट टू सी द अरेस्ट मेमोरेंडम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. In last class we are discussing memorandum of arrest
and that is a very important document which is being prepared by the police officer at the time of arrest. And that memorandum of arrest is a very important document in order to check the arbitrary arrest or an illegal arrest. It is because of this reason in memorandum of arrest all fact in respect of arrest is being mentioned, time of arrest is mentioned, place of arrest is being mentioned, then it is being attested by one witness, preferably to the family member or a respected person of your locality, then countersigned by the person who is being arrested, and then signed by the police officer. So it is a very important to see, it is a right of the person who is being arrested to see the memorandum of arrest. So this way we come to know those safeguards which is constitutionally guaranteed as well as which is guaranteed by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, provided by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita to all person who is being arrested by the police officer by the execution of ordinary law, and that rights are very important in order to protect the interest of arrested person. Now once we come to know the right of arrested person, how this right of arrested person, law in respect of right of arrested person is being get evolved, because initially that so many rights are not being recognized. So slowly by the so many judicial decisions pronounced by the Honorable Supreme Court, these rights are being expanded, and this way a proper check and balance is being established by the police power to अरेस्ट. और इस तरह से पुलिस के पावर ऑफ अरेस्ट पे बहुत सारे चेक एंड बैलेंस स्टैब्लिश हुए, और ये राइट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सपेंड किया, तो वी जस्ट ट्राई टू ट्रेस आउट द जर्नी. इसलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम उन जर्नी को जानें थ्रू सो मेनी जुडिशियल डिसीजंस of the Supreme Court in respect of right of arrested person, and that is very important for the purpose of examination point of view also, and for the purpose of knowledge point of view. Essentially how our courts has played a very important role in order to evolve the law in respect of right of arrested person. किस तरह से courts ने बहुत active role play किया right of arrest person को evolve करने में so far as the India is concerned. So here we just firstly discuss in respect of the first case, that is Joginder Kumar versus State of UP, and the decision is being pronounced in the year 1994. Now here the Joginder Kumar, a young advocate, was taken by the custody of police in course of investigation from the Ghaziabad, and once their friends and relatives tried to find out where this Joginder Kumar was kept in the custody, the police failed to disclose it कि from where he is being kept into the custody, कहाँ पे इसको custody में रखा गया है, and also police failed to give a clear reason of his arrest. In these circumstances, the close relative of Joginder Kumar filed a habeas corpus petition before a Supreme Court under Article 32, so far as claiming that the detention of Joginder Kumar was illegal. तो इसलिए 32 के अंदर writ में गए in order to enforce the fundamental rights which is being get violated by this action of the police. एक्शन ऑफ पुलिस से जो वायलेट हुआ तो उससे वो गए फंडामेंटल राइट. अब यहाँ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वॉज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what procedural safeguard is required to protect the right of person under Article 21 of the Constitution. Once a person is being arrested, what is a procedural safeguard for this proceeding? इस अरेस्ट की प्रोसीडिंग में क्या क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड को अपनाया जाना चाहिए जिससे इंश्योर हो कि अरेस्ट जो किया गया है वो सही किया गया है. तो क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होने चाहिए, पुलिस को क्या क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉलो करना चाहिए. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर
this case. Now, Supreme Court importantly recognized, Supreme Court very importantly recognized the thing. The power of arrest is one thing, and exercise of that power with a justification is another thing. It is true that police has a power of arrest under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और earlier code of criminal procedure. ये सही है कि so far as the cognizable offence is being reported to the police or police receives a credible information in respect of any commission of cognizable offence, or police has a reasonable suspicion, even a police has a reasonable suspicion in respect of commission of cognizable offence, here the police has power. By reading it, it is being clear that police has power, but power of police so far as the arrest is concerned, it is clear. But the another important thing in respect of that is exercise of that power with justification. It means that only power of police is not important. We need to also examine whether police has a justification so far as the fact and circumstances of the case is concerned regarding arrest or not. And this point is being clearly recognized in this case that both are important. Power of police in respect of arrest is important. Again, police has a justification in respect to arrest regarding fact and circumstances is also important, and it is being, even if कोर्ट क्लियरली से अरेस्ट इज़ अ सीरियस इन्वेजन ऑफ पर्सनल लिबर्टी. कोर्ट ने क्लियर कहा कि भाई अरेस्ट जब भी होगा तो सीरियस इन्वेजन पर्सनल लिबर्टी का होगा, सो दैट अरेस्ट कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन अ मैकेनिकल मैनर. इसीलिए अरेस्ट सिर्फ मैकेनिकल मैनर की आपको पावर है आप जाके अरेस्ट कर लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता. You will also at the same time examine whether I have a justification. The investigating authority or a police officer must examine whether I have a justification to arrest or not, or whether the fact and circumstances warrant that justification. क्या ये fact and circumstances यहाँ warrant कर रहे हैं कि हमको arrest करना चाहिए. तो यहाँ पे clear guideline के फॉर्म में फिर कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि अरेस्टेड पर्सन, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके रिलेटिव और फ्रेंड को इन्फॉर्म किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेस ऑफ डिटेंशन, कि कहाँ पे उसको प्लेस ऑफ कहाँ पे उसको डिटेन करके लिखा गया है. अगेन अरेस्ट मेमो बनाए जाने की बात हो रही है कि पुलिस ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर मेमो ऑफ अरेस्ट साइंड बाय एटलीस्ट वन विटनेस. द अरेस्टी मस्ट बी इन्फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट टू गेट बेल और राइट टू बी डिफेंड बाय द लॉयर ऑफ हिज ऑन चॉइस. Now arrest detail must be recorded in a police diary. पुलिस डायरी में अरेस्ट का पूरा डिटेल इसको रिकॉर्ड करना है. तो दिस वे दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच मेक्स इट क्लियर कि पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट इज़ वन पॉइंट, बट जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट in respect of the fact and circumstances present is also very important to examine at the time of arrest. Now the second important case which is being decided by the court and that play a very crucial role in order to evolve the law in respect of right of arrested person so far as the criminal jurisprudence is concerned, that is D.K. Basu versus State of West Bengal. और ये जो दूसरा केस है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट केस माना जाता है और इससे बहुत सारे राइट्स जो है, जैसे जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो राइट हिल्ड किए गए, जो राइट के रूप में गाइडलाइन दिया गया, उन गाइडलाइंस को हम लोग अब देख पा रहे हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है. जब हम लोगों ने 47, 48 ये सब देखा तो उसमें हम लोगों ने क्लियर देखा कि यहाँ उसको वो राइट्स को क्या 36 में हम लोग देख रहे हैं कि अरेस्ट मेमो बनाने की बात हो रही है. देन 47, 48 में हम लोग देख रहे हैं कि नियर रिलेटिव और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करने की बात हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेस वेयर द पर्सन इज़ टू बी केप्ट. फिर बहुत तो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड जो है D.K. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल केस डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन. तो हियर D.K. बासु इज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ लीगल एड सर्विस ऑफ वेस्ट बंगाल और ही नोटिस दैट there is a death in police custody and lockup across India.
कि देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ डेथ। उन्होंने नोटिस किया, डी.के. बासु जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वेस्ट बंगाल लीगल एड सर्विस के, उन्होंने ये नोटिस किया कि ये बहुत सारे कस्टोडियल डेथ्स हो रहे हैं इन पुलिस लॉकअप सो फार एज एंड द कस्टडी ऑफ द पुलिस इज़ बीइंग कंसर्न। तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया और हाईलाइट करते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने पूरा डिटेल जानकारी दी कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ग्रॉस नेग्लिजेंस हो रहा है या ग्रॉस मिसयूज़ ऑफ पावर हो रहा है, जिससे कि बहुत सारे डेथ इन पुलिस कस्टडी और लॉकअप में हो रहे हैं। His letter was treated as a writ petition under Article 32 of the Constitution, and because court is very much concerned due to the death of the lockup and police custody, since this is a serious invasion respect of personal liberty as guaranteed under Article 21 of the Constitution. Again, the question comes in before a court was, what procedural safeguard is required to prevent custodial violence and death? कि किस तरह क्या क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड्स पुलिस को अपनाने चाहिए एट द टाइम ऑफ अरेस्ट सो दैट कि कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल डेथ जो है उसको रोका जा सके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट 11 रिक्वायरमेंट्स 11 गाइडलाइन हेल्ड किया और गाइडलाइन दिए दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इवॉल्विंग द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, एंड दीज गाइडलाइंस आर मेमो ऑफ अरेस्ट इज़ प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना है जो कि हम लोग देख रहे हैं अब नाउ इट इज़ ऑल्सो स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक। whenever police go to arrest they must prepare a memorandum of arrest. Now right to inform relative or friend immediately, राइट टू इन्फॉर्म को भी हम लोगों ने देख लिया कि अब ये बीएनएस में स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में आ चुका है कि जब भी अरेस्ट करेगी तो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है फ्रेंड और रिलेटिव को, और साथ में मैजिस्ट्रेट भी जो है वो उसको इंश्योर करेगा कि इसको किया गया है या नहीं किया गया, इन्फॉर्म किया गया है कि नहीं। देन टाइम प्लेस एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी टू बी नोटिफाइड। मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी 48 आवर बाय डॉक्टर। राइट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ पे जो गाइडलाइन दिया है कि हर एक 48 आवर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होगा उसमें उसके लिए एक इंस्पेक्शन मेमो प्रिपेयर होता है। इंस्पेक्शन मेमो इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड सो दैट कि arrested person is properly medical examined and it is being signed by the police officer, then doctor, और साथ में जो पर्सन को जिन्होंने अरेस्ट किया है उनका भी साइन रहता है, और ये क्लियर होता है उस डॉक्यूमेंट से कि कोई मार्क ऑफ इंजरी जो है उसके बॉडी पे नहीं प्रेजेंट है इस इंस्पेक्शन मेमो के द्वारा। तो इंस्पेक्शन मेमो बनाया जाना बड़ा ज़रूरी है और उसको हम लोग इंस्पेक्शन मेमो या मेमो ऑफ इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। नाउ इंस्पेक्शन ऑफ अरेस्ट रिकॉर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट जरूर करेगा अरेस्ट के रिकॉर्ड को कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया गया है कि नहीं, इंस्पेक्शन मेमो बनाया गया है कि नहीं, उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया गया है या नहीं। नाउ पुलिस ऑफ जो भी कॉपीज़ होगी वो सारे मैजिस्ट्रेट को जाएंगे। पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट मस्ट बियर ए एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मार्क। जो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन जो एक नेम प्लेट जो हम लोगों ने 36 में डिस्कस किया था कि पुलिस जब भी अरेस्ट करने जाएगी तो वो विजिबल क्लियर एक्यूरेट नेम प्लेट रहेगा। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर नॉन कंप्लायंस यहाँ पे होता है तो दैट अट्रैक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन एंड कंटेम्प्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कि अगर कोई भी पुलिस जो है इन सारे अरेस्ट मेमो को नहीं बनाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं नॉन कंप्लायंस करेगा, तो ये जो है डिपार्टमेंटल एक्शन को अट्रैक्ट करता है। नाउ एज वी डिस्कस कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू टेक अ फ्री लीगल एड, तो दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। So we are just going to discuss Supreme Court judgment on free legal aid to the arrested person. Supreme Court के वो judgments जो कि free legal aid arrested person के respect में हैं। तो यहाँ first case हम लोग discuss कर रहे हैं हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो हुसैन आरा खातून में क्या है, 1000 of under trial prisoners were languishing in Bihar jails for a year without trial due to the non availability of legal assistance। बहुत सारे प्रिजनर अंडर ट्रायल बिहार के जेल में रह रहे हैं
थे और जिनका ट्रायल नहीं कंप्लीट हो पा रहा है क्योंकि उनके पास लीगल असिस्टेंस के साधन नहीं है, दैट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने देखा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, फ्री लीगल एड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रीजनेबल फेयर एंड जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर को अगर हमें फॉलो करना है तो हमें उनको लीगल असिस्टेंस देना है, क्योंकि लीगल असिस्टेंस नहीं मिलने के कारण वो जेल में पड़े हुए हैं। तो दिस इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन हुसैन खारा खातून। नाउ खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, विच इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज भागलपुर ब्लाइंडिंग केस। Accused were blinded by a police. No legal representation was available when accused is being produced before a court or magistrate. तो यहाँ पे क्लियर किया गया कि नहीं, फ्री लीगल एड नॉट ओनली एट द ट्रायल। नॉर्मली वट वी विल अंडरस्टैंड कि accused is produced before the trial and the court find out कि there is no legal assistance for accused, तो trial court has providing the lawyers in order to defend the accused in a trial. But here this case Khatri versus State of Bihar, which is being popularly known as Bhagalpur blinding case, made it clear free legal aid not only at the trial but also at the time of remand and interrogation. And that what we will see in section 38. section 38 में हम लोगों ने देखा क्लियर है कि इंट्रोगेशन के दौरान if the person arrested want to consult their legal practitioner, तो he has a right to consult legal practitioner। तो यहाँ भी वो बात क्लियर किया गया कि नहीं, फ्री लीगल एड जो बात हो रही है वो केवल ट्रायल के समय में ही नहीं, इंट्रोगेशन के दौरान भी है, और जब रिमांड के लिए उसको प्रस्तुत किया जा रहा है उस समय भी उसको फ्री लीगल एड, अगर उसके पास लीगल असिस्टेंस नहीं है तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द लीगल असिस्टेंस so that he can be properly defended, and our promise just fair and reasonable procedure is being get fulfilled under article 21। तो यहाँ पे क्लियर हुआ खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कि द फ्री लीगल एड इज़ नॉट ओनली अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ट्रायल बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ इंट्रोगेशन एंड रिमांड। नाउ वन स्टेप अहेड, the another case make it clear, Sukdas versus Union Territory of Arunachal Pradesh। in this clear कि let it suppose if arrested person not applied for or an accused is not applied for free legal aid, so it will be considered कि he does not require a free legal aid even if he is not prayed for a legal aid। it is the duty of the state to inform him and give a reasonable opportunity to be defend। so that is a very important Sukdas versus Union कि it is considered to be an obligation of the state to provide the free legal aid so that he can be properly defended and our proceeding before court is not to be get abused। now this way we understand Supreme Court approach so far as the free legal aid of arrested person is concerned and right in respect to get the free legal aid। now Supreme Court judgment on handcuffing, that is also very important aspect। normally what we will understand, because now 43 clause 4 जो है 43 clause 3 भी है जो हैंडकफिंग के रिस्पेक्ट में अब क्लियर कट डायरेक्शन दे दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अर्लियर देयर वाज नॉट अ क्लियर कट डायरेक्शन so far as the handcuffing is concerned, and here in a case Prem Shankar Shukla versus Delhi administration, Prem Shankar Shukla is a prisoner, challenged the practice of routine handcuffing while escorting them to court। प्रेम शंकर शुक्ला जो है वो एक प्रिजनर है, उसने चैलेंज किया कि नॉर्मली जो है वो हैंडकफिंग करके जो है रूटीन मैनर में जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है अरेस्टेड पर्सन को, उस समय ले जाया जाता है, और दैट इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। वो जो है वो सीरियस वायलेशन है डिग्निटी, और इसी को इन्होंने इस केस में प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में चैलेंज किया, और यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, हैंडकफिंग इज़ अ प्राइमा फेसी इनह्यूमन एंड अनरीजनेबल एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैंडकफिंग इज़ नॉट अलाउड इवन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और प्रोड्यूसिंग द एक्यूज बिफोर अ कोर्ट।
सो फार एज इन केस ऑफ रिमांड इज कंसर्न, वो टाइम टू टाइम जब भी रिमांड लेने के लिए जाया जा रहा है तो उस समय हैंडकफिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अलाउ नहीं है और इसको कोई रूटीन प्रैक्टिस की तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैंडकफिंग जो करना वो जो है वो आर्टिकल 21 का वायलेशन कंसिडर किया गया है। अगर हम लोग अभी भी देखें 43 में इनएप्रोप्रिएट सबसेक्शंस में, तो हम लोग को पता चल गया कि वहाँ पे भी क्लियर किया गया है कि हैंडकफिंग जो है वो सिर्फ कीपिंग इन व्यू द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को ध्यान में रख करके किया जाएगा कि कितना ग्रीवियस ऑफेंसेस है, और कुछ ऑफेंसेस जैसे कि अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ऑफेंडर है, या टेररिस्ट एक्ट का ऑफेंडर है, या ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का ऑफेंडर है, या फिर अगर पुलिस को लगता है कि अगर हम हैंडकफिंग नहीं करते हैं तो वो एस्केप कर जाएगा, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट एस्केप हैंडकफिंग इज अलाउड। लेकिन एक रूटीन प्रैक्टिस की तरह इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। ये बात फिर से कंफर्म हुई सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, और इसके जो हैंडकफिंग के गाइडलाइंस जो हम लोगों ने देखे उसको 43 में अब स्टैट्यूटरी लॉ के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। नाउ finally we are going to discuss a very important, that is Neelavati Vera versus state of Odisha. Why we are discussing it is because of this reason कि this Supreme Court judgment establish a law कि when a person is illegally detained or where the arrest is not authorized as per law, whether that person has right to get compensation due to sir illegal detention। क्या उस व्यक्ति को उस इलीगल डिटेंशन के कंपनसेशन लेने का अधिकार है, वेदर ही हैज़ अ राइट फॉर दैट अनऑथराइज्ड अरेस्ट और नॉट अरेस्टेड एज पर द लॉ, और इलीगल डिटेंशन अगर उसका हुआ तो क्या वो पर्सन कंपनसेशन ले सकता है इस चीज़ का स्टेट से, बिकॉज इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट ऑफ द स्टेट। तो दिस केस मेक इट क्लियर कि यहाँ नीलावती बेहरा जो है का सन जो है सुमन बेहरा was taken into the police custody for an investigation, and next day his dead body was found on a railway track with a multiple injury, और उसके सन का जो बॉडी है वो पाया गया रेलवे ट्रैक पे मल्टीपल इंजरी के। द मदर इज़ अ नीलावती बेहरा, जो सुमन बेहरा को कस्टडी में लिया गया उसकी मदर थी नीलावती बेहरा, और नीलावती बेहरा ने रिट पिटिशन फाइल किया आर्टिकल 32 में कि alleging custodial death was a serious violation of article 21 because the procedural safeguard is not to be ensured, कि प्रोसीजर के संबंध में जो अरेस्ट के जो सेफगार्ड थे वो फॉलो नहीं हुए, और इस कारण से उसका डिटेंशन जो है वो इलीगल था। तो यहाँ द क्वेश्चन इज वेदर अ विक्टिम फैमिली इज एंटाइटल्ड टू अ मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर द वायलेशन ऑफ फॉर सच वायलेशन। तो हियर कोर्ट आंसर अफर्मेटिवली, पॉजिटिवली कोर्ट ने आंसर किया कि यस विक्टिम ऑफ अनलॉफुल अरेस्ट, कभी भी किसी का अनलॉफुल अरेस्ट होगा या डिटेंशन होगा या कस्टोडियल वायलेंस, हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कंपनसेशन अंडर पब्लिक लॉ। कि पब्लिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पब्लिक लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत ही हैज अ राइट ऑफ कंपनसेशन फॉर अ वायलेशन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट प्राइवेट लॉ रेमेडी। इसके लिए उसको कंपनसेशन स्टेट से वो क्लेम कर सकता है। अगर अरेस्ट या डिटेंशन जो कि पुलिस ने अनलॉफुली किया है तो ही हैज़ ऑल राइट टू मूव बिफोर सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट फॉर द पर्पस टू enforcement of their fundamental rights or a legal rights also under article 226. So this way we will come to know the right of arrested person under the constitutional provision, then provision under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and we will also analyze Supreme Court's judgment regarding the right of arrested person, how this right of arrested person is to be evolved by the court's decisions, and so that so many safeguards are incorporated for arrested person in order to check the exercise of power of arrest by the police officer. So thank you. In next lecture we are going to discuss procedure to compel appearance of person. Thank you.